Colleagues, let me start by welcoming all of you to this meeting today. I'm extremely honored on behalf of STPI as well as our colleagues from the SETI consortium. I really welcome all of you to this meeting today. Ji, Assalamu alaikum Aziz Saab. Thank you for joining us, Ji. As I was saying, on behalf of STPI team, I welcome you to this online meeting on credit and finance issues faced by exporters amid COVID-19. This dialogue series is part of STPI's strengthening the use of evidence for development impact program, SEDI, in which we are collaborating with the Ministry of Commerce, FBR, and the Central Bank, State Bank of Pakistan. I'm honored to be joined here by very esteemed speakers. Let me just very quickly introduce them, of course, before we go one by one to them. We'll have Mr. Mohammad Arshad Saab, who's Senior Joint Director for Infrastructure, Housing and SME Finance Department of the State Bank. He has served as Divisional Head of Refinance. He has previously worked in Payment System Department as well. We will also be joined by Mr. Azam Saab, who's also Joint Director at the Central Bank, Senior Joint Director at the Central Bank. We also have Dr. Fariha Rahman, who has 11 years of experience in this sector, along with 7 years of working in commercial and Islamic banking and leasing sector of Pakistan. Currently, she's working with STPI as a financial inclusion expert and as an associate research fellow. She's working on financial inclusion study for BESP as well as Karandaz. We're also honored to have Mr. Azizullah Gohir Saab. He's former member of Export Development Fund, Ministry of Commerce. Currently, he's Secretary General at Pakistan Textile Exporters Association. From APMA, we have Mr. Kamran Arshad Saab. He has 3 decades of experience in managing textile business. He's Managing Director at Ghazi Fabrics. He also has vast experience in shipping and marine transport. Currently, he is General Secretary of Punjab APMA Wing. And then finally, we have Mr. Fareed Wardak Saab, who is representing the Pakistan Banks Council over here. Mr. Fareed is the head of corporate and financial institutions risk at the Habib Bank Limited. He has more than 30 years of international and domestic banking experience involving corporate banking, trade finance, risk management, etc. Previously, he's also worked with Allied Bank and American Express and Standard Chartered Bank. As I said, he's a member of Pakistan Banks Association's Risk Subcommittee, and he'll be representing PBA here. So without ado, we were hoping that in terms of format, we could first invite our colleagues from the State Bank. Of course, we had made an effort to offer some questions to all of our esteemed panelists. And we were hoping that if in the initial 10 to 12 minutes, if our colleagues from the State Bank can expand upon those questions, we could then take responses as well as observations, interventions from our colleagues from the private sector, as well as Pakistan Banks Association. And then at the end, we would aim to go back to the State Bank for their response. So with these remarks, if I can request Mr. Mohammad Arshad Khan Saab from the State Bank to please proceed. Sir, please. Sir, I think he still needs a couple of minutes to join. So if we can start from some other panelists, please. Azizullah Gohir Saab then, if Aziz Saab is ready and available, if we can request him to please start. جی السلام علیکم ارشد بھائی السلام علیکم کامران صاحب فرید صاحب احمد صاحب
فرسٹ آف آل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کووڈ کے پیریڈ میں اور اس پینڈیمک کے فیز میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایفرٹس کی، اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے کہ ان لوگوں نے بہت ساری اسکیمز ایسی لے کے آئے ایس ایم ایز کے لیے بھی اور ایکسپورٹرز کے لیے بھی، اور وی اپریشیٹ دیئر ایفرٹس. دوسرا اس میں جو آج کا بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہے، اس میں زیادہ ایشو ہمیں آتا ہے، ارشد صاحب بھی اس کو ہمارے آپس میں کورسپونڈنس چلتی رہتی ہے، اور ارشد صاحب بھی اس کو سیکنڈ کریں گے کہ جو کمرشل بینکس ہیں وہ بیسیکلی اس میں اس طرح سے انٹرٹین نہیں کرتے جس طرح سے اسٹیٹ بینک کی ایک جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے، یا اس نے وہ اسکیم کا جو افادیت ہے وہ عام آدمی تک پہنچانے کے لیے، ایکسپورٹر تک پہنچانے کے لیے، ایس ایم ای تک لے جانے کے لیے ایون سیمینار کیے جاتے ہیں، اس کو اویئرنیس جو ہے وہ اس کی مارکیٹ کے اندر دی جاتی ہے. لیکن کمرشل بینکس اس طرح سے ایکٹ نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر، ان کے اپنے ایشوز جو ہے وہ ساتھ میں ہوتے ہیں. کہیں پہ وہ جی ہماری وہ سیلنگ بسٹ ہو چکی ہوئی ہے، کہیں پہ جناب وہ مطلب آپ کو مختلف ہیلے بہانوں سے وہ کمرشل لون کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں بینگ ریگولیٹر میری گزارش ہوگی اسٹیٹ بینک سے بھی کہ ایسے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ٹیک اپ بھی کیا جائے، اور ان کمرشل بینکس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ڈائریکٹ بھی کیا جائے کہ یہ جو ہے وہ ایکسپورٹر تک یہ فیسلٹی جو ہے وہ پوری اسپرٹ کے ساتھ پہنچ سکے. مختلف ٹائم میں مختلف ہم اپنے ایکسپورٹر ممبرس کا جو ہے وہ ایشوز بھیجتے رہتے ہیں، اور ہماری 2-3 دفعہ ارشد صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی، اور سم ٹائم جو ہے وہ انہوں نے اس پہ ایکٹ بھی کیا، اور ایکٹ کرنے کے ساتھ یہ تھا کہ وہ ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا. لیکن یہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ اس میں آتا رہتا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ کمرشل بینکس کو السلام علیکم. جی ارشد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کو رول جو ہے وہ مزید اپنا میرا خیال ہے کہ ریگولیٹری پرسپیکٹیو کے اندر بڑھانا پڑے گا، تو ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ ضروری ہے. جی thank you very much Aziz. I think this point had been highlighted in one of the earlier meetings as well جی کہ probably commercial banks کو بھی اس لیول کی کوآپریشن جو ہے وہ دکھانی پڑے گی جو انٹینٹ probably central bank کی ہے یا federal government جس انٹینٹ سے جو ہے وہ آگے جانا چاہ رہی ہے. So we just thought that we had circulated just a few discussion points for agenda setting, اور اگر آپ ان پہ elaborate کرنا چاہیں گے in line with our email correspondence, and then of course we'll go back to our colleagues from the private sector, and then before we end the meeting, it's a brief meeting, but before we end it we would like to come back to you again then. But please feel free to start with your perspective on the subject G and the central bank's recent interventions for export finance. دیکھیں دو ایریاز میں یہ سمجھتا ہوں جس میں ری فائننس دیکھتا ہوں، اور ہمارے یہاں سے اختیار اور جو اعظم ہے جو بھی کنیکٹ ہوں گے تھوڑی دیر میں ایس ایم ایز وغیرہ دیکھتے ہیں. ریسنٹ انٹرونشنس تو ہم نے جو میرے پاس جو اسکیمز ہیں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ای ایف ایس اور کیا کہتے ہیں ایف ایف سیٹ کے حوالے سے، ان تینوں میں جو ہے وہ ہم نے ابھی ڈیو ٹو دی کرنٹ سرکمسٹانسز اور اس سے پہلے بھی جو ریکویسٹ آئیں، جو جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں، تو اسکیموں میں ہم نے بڑا افیکٹولی اور بڑا ڈیٹیل سے کام کیا، اور انفیکٹ ہر اسکیم کو ہم نے ٹچ کیا اور اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریڈیوس کی ہیں فار ایس ایم ایز اور فار آل کارپوریٹس. تو ایل ٹی ایف ایف میں اگر آپ کو لانگ ٹرم بتاؤں تو اس میں کافی عرصے سے ریکویسٹیں ہمارے پاس آ رہی تھیں منسٹری سے بھی، اور ایکسپورٹرس کی بھی ریکویسٹ تھی کہ جو اماؤنٹ ہے اس کو انکریز کیا جائے گیون دی سرکمسٹانسز اور جو اکنامک پریشرز ہیں. تو اس میں ہم بیسکلی 2.5 بلین سے لانگ ٹرم جو ہے وہ 5 بلین تک لے کر گئے ہیں، جس سے کافی جو ہے وہ خاطر خواہ اس کے اندر اضافہ ہوا اسکیمز کی جو ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ سیکٹرز کا بڑا جو ہے وہ ایک پریشر تھا
डिफरेंट सेक्टर्स लॉन्ग टर्म की जो स्कीम है उसके अंदर नहीं थे। तो अभी हमने रिसेंटली इस साल जो है वो ये डिसीजन लिया है कि तमाम सेक्टर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर खोले जाएं, एक्सेप्ट ये जो पावर का है जिसके अंदर सेपरेट स्कीम है। तो वो सारे सेक्टर अब जो है वो जो SMEs हैं और जो कॉर्पोरेट्स हैं वो उसके अंदर फाइनेंसिंग ले सकती हैं, जो कि एक्सपोर्ट पॉलिसी एक ऑर्डर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, उसके अंदर जो है ना फॉलो आउट करती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जॉइंट वेंचर्स और वेरियस जो है वो फॉरेन और लोकल डिमांड्स भी आई हैं, उसकी वजह से भी हमने ये जो है वो स्टेप लिया है। और इसके अंदर कोविड के बाद 6 महीने हमने एक्स्ट्रा जो है वो एक उसमें दिया है, शिपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का इसके अंदर एनहांस किया है। इसके अलावा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में जो है वो नहीं, अगर हम LTFF की बात करें तो हमने बेसिक इसके अंदर जो है ना वो ये इसकी जो डिमांड को देखते हुए पैसे इसमें जो है वो बढ़ाएं। इसके अलावा EFS का हो सकता है आप लोगों को पता हो, EFS भी जो है वो काफ़ी प्रेशर था, उसके अंदर भी हमने डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं। जैसे जो परफॉर्मेंस है वो 2 टाइम से घटा के हमने 1.5 टाइम जो है ना वो परफॉर्मेंस की है, और इससे काफ़ी जो छोटे कॉर्पोरेट्स हैं उनको काफ़ी जो है वो इसमें फ़ायदा हुआ है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी हम जो है वो चेंज लेके, पहले 5 मिलियन और 50% एक्सपोर्ट्स थी वो एलिजिबल लोग थे, अब ये है कि हम उसमें 40% और 4 मिलियन तक जो है वो लेके आ गए हैं। इसके अलावा तमाम स्कीमों में जो कि जिसमें लॉन्ग टर्म है, SAP है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ SME है, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर है, और क्रेडिट गारंटी स्कीम है, स्पेशल पर्सन, इसके अंदर जो है वो 1 ईयर की जो है वो मार्कअप के अंदर हमने जो है वो उसमें रिलैक्सेशन बेसिकली और दी है उन बोरोवर्स को जो कि मार्कअप पे कर रहे थे। इसके अंदर आपको पता ही होगा RFCC और टर्फ भी एक नई स्कीम है, ये कोविड के बाद जो है वो इसमें लाए हैं, जो कि 7% पर 10 साल ये लॉन्ग टर्म के अंदर आती है, टेम्पररी इकोनॉमिक रिकवरी फाइनेंस स्कीम, ये जो है हमने निकाली है। इसके अंदर पर प्रोजेक्ट 5 बिलियन जो है वो तक कॉर्पोरेट्स जो है वो ले सकती हैं, और ये टाइम स्पेसिफिक है। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स के लिए जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रेशर था, तो RFCC एक स्कीम हमारी निकली है, रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर कोविड, वो स्पेशली मेडिकल सेंटर्स वगैरह के लिए, और वो बेसिकली उन कॉर्पोरेट्स के लिए भी है, या मतलब मेडिकल सेंटर्स के लिए जो कि अपना ही इक्विपमेंट जो है वो मंगवाना चाह रहे हैं, इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी जो है वो उसके अंदर ले सकते हैं। वो तकरीबन 6 ईयर्स तक जो है ले सकते हैं 3% पे, और वो 200 बिलियन तक की जो है ना फाइनेंसिंग ले सकते हैं। तो ये मोटे मोटे मेजर्स हैं जो कि रीफाइनेंस स्कीमों के तहत जो है वो अभी स्टेट बैंक ने लिए हैं। इसके अलावा और भी जो है वो इन पे काम चल रहा है, कुछ स्कीम और भी SME से रिलेटेड स्कीम्स जो हैं वो उसका आज़म आपको बताएंगे, अगर आज़म लॉगिन हो गए हैं तो SME पे भी जो है बड़ा इफेक्टिवली काम हुआ है, उसकी डिटेल्स जो है वो आपको आज़म देंगे। तो रीफाइनेंस में तो ये है कि हमने SMEs को और जो छोटे एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स थे उनको बड़ा इफेक्टिवली जो है ना वो बड़ा ग्राउंड एक सेट किया है। इसके अलावा जो ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत पीछे रह गई थी और जो फाइनेंसिंग नहीं लेती थी, तो उनको भी हमने टचअप किया है। आप हो सकता है क्योंकि इस वक्त ये चल रहा है सारा मामला, मिनिस्ट्रीज भी हैं इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ IT और ये सारे कुछ, IT मिनिस्ट्री से भी हमारी जो है ना वो बात चीज़ चली, जिसमें पाशा PSEB वगैरह है, तो एक मॉडल हमने बेसिकली बैंकों के साथ और पाशा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें एक मॉडल जो है ना वो लेके आएंगे, तो उसमें हम IT इंडस्ट्रीज को भी, जो छोटी कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स वाली, उनको भी जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। इस वक्त वो बेसिकली इन बिटवीन है कि बैंक्स ये देख रहे हैं कि किस तरीके का जो है वो कोलेटरल उन कॉर्पोरेट से जो है ना वो लिया जाए, क्योंकि वो बहुत छोटे कॉर्पोरेट्स हैं, उनके पास कोलेटरल वगैरह रखाने कुछ नहीं होता, तो किस तरीके से इसको जो है ना वो हम एड्रेस करते हैं, तो वो फिर स्टेट बैंक लेके आएंगे, देन वी विल डिस्कस कि वो IT इंडस्ट्री को हम किस तरीके से इफेक्टिवली करना चाहते हैं। अदर देन दैट IT इंडस्ट्री ओपन है, वो हमारी सारी स्कीमों के अंदर वो लोग आ सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी डिमांड नहीं है बेसिकली, और ये कॉर्पोरेट की तरफ से जो है वो डिमांड है। आप समझें कि बहुत कम जो है वो
हार्डवेयर के अंदर 6.5 मिलियन का जो है वो पिछले साल दिसंबर का मैं आपको फिगर बताऊं तो वो विच इज़ नथिंग आउट ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस। तो आईटी इंडस्ट्री को भी आईटी मिनिस्ट्री भी जो है वो इस चीज़ को बड़ा फोर्सफुली देख रही है और स्टेट बैंक इफेक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली वी डिपेंड ऑन कमर्शियल बैंक, क्योंकि क्रेडिट बेसिकली कमर्शियल बैंक का ही वो है, तो वो जैसे जिस तरीके से भी वो इस चीज़ को लेके चलेंगे तो वी विल डिस्कस विद पाशा, पीएसईबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। तो एक ये भी हमारा जो है वो आईटी सेक्टर पे पूरा एक बहुत बड़ा एक पंडोरा खुला हुआ, इस पे हम बड़ा इफेक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं। आज़िम, अगर आप थोड़ा सा एसएमई की तरफ से भी बता दीजिए कि कोई नए मेजर्स जो हैं वो क्या लिए हैं अभी स्टेट बैंक ने, तो ये ज़रा एक एडिट। जी जी सर, जी सर। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ा सा मैं यहाँ पे इशू था सुबह नेटवर्किंग का सर। अच्छा साहब, आवाज़ आ रही है? जी प्लीज। ठीक है, सही है। तो बस मैं ये अर्शद साहब ने जैसा कि बताया कि एक तो कोविड के पर्सपेक्टिव से उन्होंने जो कुछ स्कीम्स हैं हमारी उनका जिक्र किया। रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो रेगुलेटरी मेयर्स में स्टेट बैंक ने हमारे जो पीआरस होते हैं जो हैंडल कर रहे होते हैं एसएमई फाइनेंसिंग को, या जो बैंक्स जिसको अबाइड कर रहे होते हैं, वो रेगुलेशंस उनको बोला जाता है प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। तो उनमें कुछ अमेंडमेंट्स करके और कोविड अफेक्टेड एसएमईज को दिया गया है। जैसा कि अर्शद साहब ने बताया कि ऐसे एसएमई बारोअर्स जो प्रिंसिपल पे नहीं कर सकते तो उनको जो है 1 साल का रिलीफ दिया गया है कि आप 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर प्रिंसिपल और मार्कअप जो है वो दोनों नहीं पे कर सकते तो फिर उसके लिए रीस्ट्रक्चरिंग और रीशेड्यूलिंग जो है उसकी सहूलत मुहैया की गई है एसएमई अफेक्टेड बारोअर्स को। अपार्ट फ्रॉम कोविड अगर मैं बात करूं तो कि भाई एसएमई के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल स्टेट बैंक जो है जो मेयर्स ले रहा होता है, हम स्टेट बैंक अपने एंड पर काम कर रहा है लीगल एंड रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी ताकि एसएमईज को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अवेलेबल हो। तो साहबजादा स्टेट बैंक का काम रेगुलेशंस बनाना है, तो लीगल और रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हुए स्टेट बैंक एसएमईज को एसएमई फाइनेंसिंग के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट लेता है। दूसरा एरिया होता है मार्केट डेवलपमेंट, ताकि मार्केट साइड पे एसएमईज को एनकरेज किया जाए और प्लेयर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए और मार्केट को स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरा मेयर इस तरफ होता है। और एक और एरिया जिस पे हम काम कर रहे होते हैं वो है कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस क्रिएशन। ये दोनों साइडों पे यानी डिमांड और सप्लाई, बैंकिंग साइड पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम कर रहे होते हैं और डिमांड साइड पे हम अवेयरनेस क्रिएशन पे काम कर रहे होते हैं। तो इसमें ना सिर्फ खुद स्टेट बैंक काम कर रहा होता है, खुद भी हम फील्ड में जाते हैं और अवेयरनेस और ट्रेनिंग वगैरह के लिए हम एहतमाम करते हैं। साथ हमारे जो सब्सिडरी ऑफिसेज हैं, निबाफ है या स्टेट बैंक की जो फील्ड ऑफिसेज हैं जो कि 16 सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं, हम सब मिलकर इस कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस क्रिएशन पे काम कर रहे होते हैं। तो रीसेंट अगर मैं बात करूं जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसमें स्टेट बैंक या तो डायरेक्टली वहाँ पे मौजूद है या फैसिलिटेशन का रोल किया है मार्केट डेवलपमेंट के हिसाब से, तो एक ई रजिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री। तो एक लॉन्ग पेंडिंग एक इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान में सिक्योर ट्रांजैक्शन रिजीम को स्ट्रेंथन कर, बैंक इस तरह की रिकमेंडेशंस थी हमारे पास कि एक सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री जो है वो बनना चाहिए। तो स्टेट बैंक उसको फैसिलिटेट कर रहा था। पहले लॉ बना, फिर लॉ बनने के बाद फिर उसकी अमेंडमेंट रिव्यू, फिर उसका पास हो गया और अब अल्टीमेटली 27 अप्रैल 2020 को ये सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री जो है वो ऑपरेशनलाइज हो गई अंडर एम्बिट ऑफ SECP। तो SECP के साथ ये अटैच कर दी गई है और ये वर्किंग कर रही है। तो इसका काम ये है दरअसल के जो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज हैं एक तरफ, यानी ये एक बड़ा जो इसकी जो टारगेट मार्केट है वो है अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज, जिसमें साहबजादा SMEs भी शामिल हैं, दूसरी रूरल इंटरप्राइजेज भी शामिल हैं, एग्रीकल्चर, इंडिविजुअल, ये सारे इसकी टारगेट क्लाइंट्स इसके बन जाते हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज। और दूसरा है मूवेबल असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना।
تو یہ دو بڑے یعنی ایک ایسے وہ ہنڈرنسز ہیں جو SMEs کے اینڈ پر پائے جاتے ہیں, یہ دونوں جو ہیں اس انیشیٹو کے ذریعے ایڈریس ہو رہے ہیں. تو سیکیور ٹرانزیکشن رجسٹری SMEs کے موویبل اسیٹس پر چارج کریٹ کرے گی, اور بینکس ول بی ایبل ٹو کریٹ یا رجسٹر دیئر چارج ود STR. تو اس طرح سے جو ان کے موویبل اسیٹس ہیں جو پہلے ان کے لیے کارآمد نہیں تھے, اس رجسٹری کے بننے کے بعد وہ ان کے لیے کارآمد ہو جائیں گے, اور وہ ان کو یوز کرتے ہوئے بینک سے فائنانسنگ لے سکیں گے. یعنی ایک تو یہ ایک انیشیٹو ہے. دوسرا جو انیشیٹو ہے وہ جو ریسنٹلی, اور وہ ابھی آپریشنلائز نہیں ہوا لیکن وہ عنقریب وہ بھی ہو جائے گا, وہ ہے پاکستان کریڈٹ گارنٹی کمپنی. تو یہ بھی اسٹیٹ بینک کی فیسیلیٹیشن سے یہ وجود میں آ رہی ہے, اور جس کا پرپس صاف ظاہر ہے یہی ہوگا کہ کریڈٹ گارنٹی پرووائڈ کی جائے گی اس ادارے کے ذریعے ٹو بینکس اینڈ DFIs, تاکہ وہ آنورڈ SMEs کو فائنانسنگ کر سکیں. کیونکہ ایک بڑا ایشو یہ آتا ہے SME فائنانسنگ میں رسک کا. تو رسک کو اگر پارٹیسپیٹ کر لیا جائے تو صاف ظاہر ہے بینکس ول بی ایبل ٹو ایکسٹینڈ فائنانسنگ ٹو SMEs. تو ایک بڑا ایشو جو ہے اس طرح سے حل ہو جائے گا. تو یہ دو بڑے انیشیٹو ہیں جو ریسنٹلی جو ہے وہ ہونے والے ہیں, یا ایک اس میں سے ہو چکا ہے اور دوسرا بھی ہو جائے گا. پیرالل جو دوسری میں نے آپ کو کہ وہ چیزیں ریویو ہو رہی ہیں, ریگولیشنز کو ہم ریویو کرتے رہتے ہیں, کہاں پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے ہم ان کو کرتے رہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی فار پروموشن آف SME فائنانس 2017 میں انٹروڈیوس کرائی تھی, اس کو ہم ریویو کرتے رہتے ہیں تاکہ کہیں پہ اگر مزید انٹروینشنز کی ضرورت ہے تو ان کو کر لیا جائے. تو یہ اوورال ایک کرکس ہے جہاں پہ ہم SPP انٹروین کر رہا ہے. دس از فرام مائی سائڈ, اور اگر کوئی کوشچن آنسر ہوں گے تو Thank you. Thank you, Azam Saab, and thank you, Arshad Saab, for this very, very comprehensive overview, and much encouraged to see that COVID has given all of us a chance to transition towards new ways of working. اور I think آپ دونوں نے ہی جو نئی انٹرونشنز بتائیں خاص طور پہ اسٹارٹ اپس کے لیے, as well as interventions for potential exporters, interventions for unincorporated entities. I think these are all welcome measures. And I think it'll be best to also hear some feedback from our panelists from the private sector. And for this, if I can invite Mr. Kamran Arshad Saab. Kamran Saab, please go ahead. Ji, Assalamu alaikum. I think, can you hear me? Yes, please. I think I would like to start off with praising all the initiatives taken by State Bank of Pakistan. And I think State Bank of Pakistan has been highly conducive and very helpful. And for the first time in my 20-25 years of working experience as an exporter and a large industry, I've seen the State Bank being so proactive. So I think credit has to be given where credit is due. State Bank came out with the loan for salary scheme. State Bank came out with the 1-year moratorium. So a lot of positive initiatives have been taken. I think State Bank has done so far a good job. There are a few things that need to be streamlined. Like for example, recently State Bank ne jo 180 days ki extension di thi on foreign proceeds getting delayed or stuck due to COVID-19. Factories being shut abroad یا remaining shut یا second wave of COVID آ رہی ہے, تو اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی حال ہی میں ایک سرکولر آیا تھا جو 180 ڈیز کی پیمنٹ ایکسٹینشن الاؤ کر رہا تھا کہ اگر آپ نے یہاں $25 فائنینسنگ لی ہے اگینسٹ یور ایکسپورٹ بل اینڈ اگر وہ ریئلائز نہیں ہوئی تو اس میں اسٹیٹ بینک واز کائنڈ انف ٹو گیو اے ٹائم ایکسٹینشن. اس میں صرف ایک جو ایشو آ رہا ہے وہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ some banks, commercial banks are resisting it. Secondly, اگر ایکسپورٹ بل کے اگینسٹ کسی نے ڈالر فائنینسنگ FE25 نہیں لی, پاک روپی فائنینسنگ لی ہے جسے FAPC کہتے ہیں, تو اسٹیٹ بینک کے سرکولر میں FE25 کی پیمنٹ ایکسٹینشن الاؤڈ ہے ڈیو ٹو فیکٹریز ابراڈ بینگ شٹ اور the exporter abroad being shut, importer abroad being shut. However, FAPC پہ کوئی ایکسٹینشن نہیں الاؤڈ, جس کی وجہ سے اینڈ پرپس تو دونوں کا سیم ہے.
کہ آپ چاہے ڈالر فائنینسنگ لے لیں چاہے روپی فائنینسنگ لے لیں. تو اس میں روپی فائنینسنگ اگر کسی نے لیا انڈر دا گائز آف FAPC, اس پہ بینکس آر ناٹ گیونگ اے پیمنٹ ایکسٹینشن. Under FE25, yes, they are giving payment extension. So I think that's one thing. TURF, which is a very encouraging scheme jo State Bank laya hai, and it is valid till 31st March 2021. Usme I would like to put up a request if State Bank can extend that scheme, because that will further lead to economic activity in Pakistan. However, جو آپ کے کووڈ-19 کے ایفیکٹس ہیں یا سیکنڈ ویو ہے یورپ میں US میں, جو آپ کی پرائمری ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں وہاں بھی ایک سیکنڈ ویو چل رہی ہے, وہ دسمبر تک چلتی رہے گی. اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے وہ ہمیں انٹل کرسمس نیو ایئر تک کلیئرلی پتہ نہیں چلے گا. اٹ از آن دا سلو ڈاؤن, انکریجنگ ٹرینڈ ہے, بٹ ابھی اٹ از ٹو پری میچور ٹو کال این اینڈ ٹو اٹ. اگر یہ ٹرف کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں فرام March 31st till June 30th 2021, تو I think it will be very positive for economic activity, economic development. Plus it's a better scheme than LTFF, جس میں کچھ strings attached تھے as far as exports are concerned, یا کہ it was primarily for the export oriented industry. اس میں brown field بھی ہو سکتا ہے, it's not just green field. پلس اس میں لوکل انڈسٹری کو بھی آئی تھنک سپورٹ ملے گی besides ایکسپورٹ انڈسٹری. سو آئی تھنک دیز آر سم آف دا پوائنٹس دیٹ آئیڈ لائک ٹو ریز. اسٹیٹ بینک نے بڑے اچھے انیشیٹیوز لیے ہیں, کمرشل بینکس ان کی پوری طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے, تو اس میں probably some intervention from State Bank might be required to facilitate exporters stuck in COVID hit countries especially. That's all I have to say. Thank you. ارشد آپ کی سوری وقار میں نے آپ کی دونوں یہ جو ایشوز ہیں وہ نوٹ کر لی ہیں, اینڈ لیٹس سی, بیکاز یہ ٹرف میں بھی اگر آپ دیکھیں ایکسٹینشن کی بات, تو آپ نے وہ صحیح کہا کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے اور یہاں بھی جو ہے وہ سیکنڈ ویو اور سارا کچھ ہے. تو یہ تو ہم بیسکلی ایکسٹینشن جو پہلی بھی کی تھی تو اسی چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کی تھی. تو وہ ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن, لیٹس سی ود ان 1 or 2 months کی کیا کس طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے. تو اس کے بعد اوبویسلی اگر کوئی اس طریقے سے پریشر ہوا تو ڈیفینیٹلی ایک ذریعہ یہی ہے کہ وہ ایکسٹینشن جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی, لیکن یہ گیون دا پریزنٹ سرکمسٹانسز. تو لیٹس سی کہ ہم جو نیکسٹ ریویو کرتے ہیں اس کا, اس میں جو ہے وہ میں یہ بالکل آپ کو میں نے کنسرن نوٹ کر لیا, I'll take to senior management کہ اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے فردر کر سکتے. دوسری بات وہ نہیں کہ ایکسٹینشن جو FAPC ہے یہ بھی میں نے نوٹ کر لیا, اس کو میں ڈائریکٹلی نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن یہ کہ میں سینئر مینجمنٹ سے اس کو جو ہے نا وہ ٹیک اپ کروں گا اس میٹر کو, اور EPD سے بھی ٹیک اپ کروں. وقار صاحب آپ کی اجازت سے اگر میں ارشد صاحب اس میں کامران صاحب نے جو بات کی, ایون ڈالر فائنانسنگ میں بھی تمام کمرشل بینکس جو ہیں وہ اس طرح سے رسپانس نہیں دے رہے ہیں جیسے کہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا ایک ویژن تھا اور اسٹیٹ بینک اس کو ایکسپورٹرز تک پہنچانا چاہ رہا تھا. دوسرا جو ہمیں ایشو آتا ہے وہ اگین وہی ہے کہ جو ہماری بڑی انٹیٹیز ہیں, بڑے ایکسپورٹرز ہیں, ان کو بھی اگر آپ میرا خیال ہے کہ لوپ میں رہتے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ, اور ان کو اگر اس میں پارٹ 2 میں یا اس میں ERF میں جو ہے وہ نہیں ملتا ہے, ان کو ایشوز آتے ہیں, پھر ہم آپ سے بولتے ہیں کہ آپ انٹروین کریں. تو جو ہمارا SME ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایکسپورٹر میں, وہ اس کو ہم نارملی کمرشل ایکسپورٹر بولتے ہیں, تو اس کو تو بالکل ہی جو ہے وہ آپ کے کمرشل بینکس جو ہیں وہ اس میں لفٹ نہیں کرواتے ہیں. اور ہمیں لوکلی مطلب ہم اگر لاہور میں ہیں, فیصل آباد میں ہیں, تو ہمارے لیے وہ اگین ایک پوری ایکسرسائز ہوتی ہے کہ ہم کراچی ہیڈ آفس کو اس میں انوالو کریں, اور وہ کراچی ہیڈ آفس پھر اس پہ کسی بھی طرح کا ایکشن لیتا ہے. تو ہماری ریکویسٹ ایک ساتھ میں یہ بھی ہے, چونکہ اسٹیٹ بینک لاہور میں بھی موجود ہے, ہمارے پاس فیصل آباد میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, ہمارے ممبر سیالکوٹ میں بھی ہیں, تو وہ آپ یہاں پہ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ایک ٹیم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو ان چیزوں کو, جو آپ لوگوں کی اسکیمز ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن, ان کی ٹرو امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ مانیٹرنگ, اور اس کے لیے اگر ہمارے کو مسائل ہیں
تو اس کو ہمیں لوکلی بھی سنا جائے اور لوکلی جو ہے وہ ان بینکوں کو کے ساتھ انٹروین کیا جائے. تو اس کو بھی ذرا کائنڈلی دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے گوہر صاحب. اچھا وقار صاحب, میں simply I think State Bank for I'd like to back them up because I think State Bank has done a commendable job as far as the relief schemes are concerned for the COVID-19. As far as the SME is concerned, I think they have done a lot of work for SMEs. Azam Saab ne jo cheezein mention ki thi, like he mentioned about the secure transaction registry. इससे बैंक्स को बहुत फायदा हुआ है, एंड इनफैक्ट लाइक इन HPL फॉर एग्जांपल हमने काफी अपने जो SMEs है हम उनके जो चार्जेस हैं वी आर नाउ एबल टू रजिस्टर देम, जो पहले हम नहीं कर सकते थे. प्लस जो रिस्क शेयरिंग स्कीम जो स्टेट बैंक ने निकाली, आई थिंक दैट वाज अ फैंटास्टिक आइडिया जिसने भी ये सोची थी. प्लस स्टेट बैंक ने लास्ट ईयर दिसंबर में टर्न अराउंड टाइम के ऊपर भी एक सर्कुलर निकाला था, जिसमें स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 15 दिन का टाइम उन्होंने दिया था कि बैंक्स हैव टू कम बैक टू द कस्टमर यू नो with either a yes or a no, and there was also a turnaround time of 25 days for medium enterprises. ये I think आजम साहब ने मेंशन नहीं किया था, तो I thought that I should highlight it. फिर जब COVID-19 आया तो स्टेट बैंक ने कहा कि for deferment of principal and for salaries and wages, they imposed a time limit of 15 days upon the banks. So this was also a very good measure because banks were then forced to ensure that the time, that the turnaround time was adhered to. उसके अलावा जो आपकी जो salaries and wages initially जब COVID आया तो it was done for 3 months, April, May and June. And then later on, the PBA also impressed upon State Bank, and they were very kind to extend this for another 3 months, July to September. अच्छा, one other thing जो आपने कहा है ना कि banks ज़्यादा receptive नहीं होते, one of the reasons I feel is because जो SME exporters हैं उनको ज़्यादा knowledge नहीं है about what are banking facilities and what are foreign trade requirements. So maybe आप अपनी जैसे गोहिर साहब, you know, if he is in an association, maybe they should help कर सके about the documentation requirements of State Bank as far as these also banking facilities. बड़ी स्टेट बैंक को, क्योंकि हम इत्तफाकन हमारा जो ऑफिस है वो स्टेट बैंक के बिल्कुल साथ है, मेरा ख्याल है कि सामने नजर आते हैं हम एक दूसरे को. तो वो अगर ऐसा हो जाए तो मेरा ख्याल है कि SMEs के लिए बहुत अच्छा ये एक इनिशिएटिव होगा हमारी तरफ से भी, और इसमें आपकी जो है वो शामिल होएगी कोशिश भी इंशाल्लाह. अच्छा गोहिर साहब, मैंने कुछ और चीजें एक्चुअली नोट की थी जो यू नो फ्रॉम अ बैंकिंग पर्सपेक्टिव जो हम देखते हैं, जो हमारे लार्ज एक्सपोर्टर्स है ना, वो रिसीवेबल्स जो होते हैं उनकी इंश्योरेंस भी करवाता है थ्रू देयर ऑफशोर सब्सिडरीज. तो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रिसीवेबल्स इंश्योरेंस नहीं होती है, नॉट ओनली फॉर द लोकल बायर्स बट ऑल्सो फॉर एक्सपोर्टर्स एज वेल. So this is something that maybe the government should look into, setting up an insurance जिसमें receivables insurance या अपने जो foreign counterparts हैं उनसे वो liaise करके receivables insurance करा सके. So जैसे for example आपने अगर DA contract के against आपने bill discount किया है, तो bank is not sure कि whether the foreign buyer will actually remit the payment or not. And some of the large exporters, they are getting this receivable insurance offshore. So that is an area to look at as well. Yeah, agreed sir. Sir, if I may, can I add something here? ये जो भी point बोला था panelist ने. Please Kamran sir, please go ahead. Sir, I think that's an excellent point जो भी मेरे colleague ने बोला, और इस चीज पे मैं गवाह हूँ कि हम अक्सर overseas कहीं ना कहीं through Germany या through some other country
credit insurance करा रहे होते हैं DA contracts की, whether 60, 90, 120, 150 days, and often हमें नहीं पता होता कि जो एक्सपोर्ट में जिसको हम माल बेच रहे हैं DA पे, whether वो इतना क्रेडिट वर्दी है या नहीं है. तो एक डन एंड ब्रैड स्ट्रीट की क्रेडिट रिपोर्ट होती है, वो थोड़ी जेनेरिक सी होती है और वो अक्सर रियल टाइम में अपडेटेड नहीं होती. आज की बदलती दुनिया में हमारे पास वो टूल्स या वो रिपोर्ट्स को एक्सेस नहीं है क्रेडिट वर्दीनेस की, जो प्रोबेबली स्टेट बैंक के पास उनके डिस्पोजल पे होंगी, या डिफरेंट उनके पास प्लेटफॉर्म्स होंगे किसी यूरोपियन या अमेरिकन बायर या इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने की. रियल टाइम में स्टेट बैंक कैन डू अ फार बेटर एंड फैंटास्टिक जॉब ऑफ दिस कंपेयर टू हमारे जैसे एक्सपोर्टर्स. जिस तरह मेरे कॉलीग ने मेंशन किया कि हम किसी थर्ड इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करेंगे अब्रॉड, और वो थर्ड इंश्योरेंस कंपनी अक्सर किसी और से री इंश्योरेंस करा रही होती है बैक टू बैक. तो उसमें आई थिंक स्टेट बैंक कैन प्ले अ वेरी गुड रोल इफ दे कैन प्रोबेबली सेट अप an insurance arm where the exporters of Pakistan will pay for it. So it's a very good concept, especially during COVID. हमें यकीन करें नहीं पता कि हमारा कौन सा buyer इस वक्त किस कंडीशन में है फाइनेंशियली, और आपको पता है बाहर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर वो इंपोर्टर्स को एक्सपोर्टर्स को या अपने वेंडर्स को देना अक्सर पसंद नहीं करते. तो आई थिंक इस सेंस में स्टेट बैंक कैन इंटरवीन और सेट अप अ सेपरेट इंश्योरेंस आर्म एंड क्रिएट अ revenue stream for themselves, and all exporters of Pakistan would love to subscribe to that rather than going to a third, fourth insurance arm abroad. I think that's a great idea that my colleague raised, and that's just a suggestion on this platform. कामरान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है सर. हम लोग बेसिकली मेरे मेंबर्स और हम लोग कोई 4-5 मिलियन डॉलर जो है वो रशिया के साथ गवा चुके हैं इन पास्ट, और उसके लिए हमने जो भी पॉलिटिकल, सोशल, लीगल कोशिश करनी थी वो कर चुके हैं, लेकिन वो हमें आज तक वापस नहीं मिल सके. तो ये बड़ा ज़रूरी है, और इसमें मेरा ख्याल है कि अगर ये फैसिलिटी हमें SPP प्रोवाइड कर दे तो वी वुड लव टू डू दैट. रोहित साहब एंड कामरान साहब, पॉइंट नोटेड. नो डाउट आइडिया बहुत अच्छा है, और ये भी हो सकता है कि अगर आप इंडिपेंडेंटली हमें लिख भी दें रिक्वेस्ट के सेंस में, तो इसको इशू को हम फर्दर जो है ना वो टेक अप कर सकते हैं. जी, थैंक यू अर्शद साहब. May I invite here our colleague Dr. Fariha Armaghan. Dr. Saab, if you are there, please. Everyone. It's over to you. Assalamualaikum. Can you hear me? Yes, please. Thank you, Dr. Saab, for providing me this opportunity. I would like to give a bit of an evidence-based perspective concerning this topic. Actually, COVID का तो impact है negative, definitely, but context really matter. Where does our SME sector stand in the first place before we actually estimate the impact of COVID? So concerning our SME sector, in Pakistan, there are around 5 million micro, small and medium enterprises, out of which 180,000 SMEs have access to lending by commercial banks, while 195,000 they borrow from micro enterprises, which offer very high interest rates, which actually hurt these SMEs profiles. Rest rely on shadow financing, including loan sharks. So SMEDA ने भी estimate किया कि पाकिस्तान की जो SMEs हैं उनकी working capital requirement is around 2.8 trillion, out of which less than 500 billion is served by formal banking. जबकि बाकी जो सारी जो demand that we are actually looking the impact of COVID with a highly financially excluded enterprise sector in Pakistan. They are already in deep trouble. और उस पे थोड़ा सा evidence में जो disconnect है, that of course, as all the other panelists mentioned, that State Bank did a great job in great initiatives. I mean, not during this COVID, but if we look back in 2011, raising the deposit rate to 5% and then increasing it to 6.5% in the interest of depositor. Initially, it was 2%, and commercial banks were enjoying one of the highest spreads in the region. So they've always looked into the social interest as a monetary authority. लेकिन जो evidence के जो
perspective से अगर हम बात करें तो एक सर्टन बैरियर डायमेंशन है जिसकी वजह से अगर सप्लाई साइड प्रोएक्टिव हो भी जाए और डिमांड साइड अगर उसको एब्जॉर्ब ना कर सके ड्यू टू सर्टन बैरियर्स, देन इट रियली डजंट मेक एन इम्पैक्ट व्हिच इज डिजायर्ड. Or we can say it like technically access does not mean usage because of barriers which are in place. So we are talking about the State Bank refinance scheme, again a great initiative, massive risk pooling by the State Bank, 30 billion rupees earmarked by government for default absorption, बिल्कुल 3% का interest rate कर दिया गया, not to lay off workers and to just stabilize them. लेकिन issue उसमें ये है कि मार्केट सिग्नल की बहुत इंपॉर्टेंस है एट द राइट टाइम, अदरवाइज इट लीड्स टू अ नेगेटिव पॉलिसी इम्पैक्ट. स्टेट बैंक ने तो ऑफर कर दिया इनिशिएटिव, और लेकिन जब बैंक्स के पास ये आई तो बैंक्स ने इनिशियली कोलैटरल्स डिमांड की and very strong audited accounts and very strong financial statements. Now this is something which is illogical at the end of commercial banks, क्योंकि अगर इनके पास strong audited accounts या strong financial statements होती तो इनको ये एक्सेस टू कैश या लोन की एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत ही नहीं थी. आई मीन दीज आर द फर्म्स व्हिच आर एक्चुअली इन डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, बिकॉज ऑफ डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो एक तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट में कि वो जो पॉलिसी एक्शन था, the word of mouth, the market signal was that it's very difficult. I actually maybe if I can request our colleagues to also have a look at the Q&A which has been posted by some of the members of our audience. So one of the questions which we have received was around revisiting the role of commercial banks in COVID times. Of course, this is a new time for them as well, and of course for the banking sector as well, seeing them as a business entity, it's important to reduce their own regulatory burden. Now, whether that is possible or not, given the heightened FATF regulations, that still remains an issue, because banks would have their own regulatory compliance, and of course with compliance comes additional cost. We also had another question that why there is challenge in getting data on SME exports, and whether collaboration between SAMIDA and State Bank of Pakistan can help, and a related question around of course finding small mid-sized exporters and where they are, and in this regard, maybe if I can pose a question to Arshad Saab or Azam Saab from the State Bank, that one of the evaluations that comes out from the recent studies on EFS, LTFF, is that yes, these schemes have led to exports of traditional items. However, these schemes may not have led to export diversification, or even within the same tariff lines, diversification across various different HS codes. Number one. Second, we also see in the recent evaluations which are coming up that EFS and LTFF haven't been geared yet to cater for startup exporters and for potential exporters. They are still very much geared towards traditional exporters. So if I can sort of request Arshad Saab for his response on these recent evaluations which are coming out on EFS and LTFF. जी वकार, थैंक यू. आपके जो पहला क्वेश्चन है उससे about diversification of EFS and especially respect to LTFF. आपको पता ही होगा EFS के अंदर एक नेगेटिव लिस्ट है जिसके अंदर सारे सेक्टर्स हैं. सर LTFF जो है वो कोई खास एक्सपोर्ट बेस, ये दोनों स्कीम आपको पता होगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं. LTFF में रिसेंटली मैंने जैसे पहले भी बताया कि अभी काफ़ी एक सेक्टर्स थे जो कि वाकई जो एड्रेस नहीं हो रहे थे, लेकिन हमने अभी तमाम सेक्टर्स जो है ना उसमें जो है वो खोले हैं. और वो वाले जिनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो एक तरीके से ऑथेंटिकेट करती है, बट ये सेक्टर है, ये वैल्यू ऐड कर सकता है और इसको जो है वो फाइनेंस देनी चाहिए. बाकायदा एक बेसिकली एक रूटीन एक प्रोसीजर है.
बट जहाँ तक आपकी बात डाइवर्सिफिकेशन की है ना, सो डाइवर्सिफिकेशन मैं समझता हूँ रेगुलेटरी बॉडी तो यही कर सकती है कि वो अपने फाइनेंसेस को ओपन करे फॉर ऑल सेक्टर. नाउ मैं लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ आईटी सेक्टर. वो ये कि आईटी सेक्टर कहता है कि आईटी सेक्टर इससे जो है ना फैसिलिटीज से फाइनेंसिंग फैसिलिटीज से जो बहुत दूर है या इसको प्रोवाइड नहीं होती. और इससे मेरे ख्याल से ये फरिया का क्वेश्चन भी एड्रेस होगा. ऑब्वियसली जैसे आपने भी बताया कि वो बैंक्स का जो है वो क्रेडिट है, इट्स बैंक्स रिस्क है, और बैंक ये देखते हैं कि किस तरीके से किसको जो है वो फाइनेंस अलॉट करनी चाहिए. बिकॉज स्टेट बैंक ने तो अपना काम कर दिया रेगुलेटरी और पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ बात डाइवर्सिफिकेशन की, तो आईटी इंडस्ट्री की मैं ये बात कह रहा था, वो ये कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें ना पिछले 10, 15, 20 साल में, तो जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं और जो इवन फ्रीलांसर्स भी हैं, वो फाइनेंसिंग अवेल नहीं करते. जहाँ तक बैंक्स की बात है, ऑब्वियसली बैंक तो अपना जो है वो अपने सेटअप की भी बात की, तो बैंक्स तो अपनी जो है वो कंप्लायंस करेगा, जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगा. हाँ, ये नहीं हो सकता वो ये कि मैं चला जाऊँ और मैं कहूँगा मैं रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता हूँ, हाँ मुझे फाइनेंसेस दें क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो आपको ऑब्वियसली दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन. तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि मतलब रेगुलेटरी बॉडी करती है. हम तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए सेमिनार्स भी करते रहते हैं, हम अवेयरनेस सेशन भी करते रहते हैं. गोही साहब ने जैसे बताया फैसलाबाद में भी हम गए थे, इवन गवर्नर साहब भी गए थे वहाँ पे, और स्कीम के बारे में उन्होंने जो है वो काफ़ी डिटेल से जो है ना वो सेशन किए. और हमने काफ़ी डिफरेंट सेंटर्स में हमारे जो है वो लड़के जाते रहते हैं, अवेयरनेस सेशन करते रहते हैं. तो ये सिर्फ वन साइडेड प्रोसीजर नहीं है, ये टू वे भी है. एक्सपोर्टर्स बेसिकली जो आना चाह रहे हैं उनको अगर जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आते हैं उनको बैंक जरूर फैसिलिटेट करते हैं. तो डाइवर्सिफिकेशन को मैं ये कहूँगा. और जहाँ तक स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स, वो ये है कि वो फिर बात वही आ जाती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. तो ऑब्वियसली जो एक प्रोसीजर है बैंकों का वो तो उसको अडॉप्ट करेंगे, और क्योंकि बिकॉज दे अल्टीमेटली हैव टू रिपोर्ट टू स्टेट बैंक कि भाई हमने जो है वो इसी तरीके से कंप्लायंस की. और ऐसा नहीं है, हमारे पास इश्यूज उठते हैं और रेज होते हैं, और इश्यूज की बाकायदा हमारे पास बेसिकली जब हम पॉलिसी रिव्यू करते हैं आफ्टर एवरी 3 months और 6 months गिवन द सर्कमस्टांसेस, तो हम सारे इशू को जो है वो एड्रेस करते हैं. और उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज लोगों के एड्रेस हो रहे होते हैं, छोटों के और बड़ों के. आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है कि जो है वो जो एसएमईज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन फैसिलिटीज से वो नहीं होती. लेकिन ऑब्वियसली वो बात बिल्कुल यही आती है, हम तो बैंकों को कहते रहते हैं और हमारे पास केसेस भी आते हैं कि भाई आपके पास जो आ रहा है डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहा है, आप उसको जो है ना फाइनेंस अलाउट करें. इससे ज़्यादा जो है वो मतलब ऐसी कोई स्कीम नहीं हो सकती कि कोई भी आए और जो है वो फाइनेंसिंग जो है वो लेता चले. देयर आर कंप्लायंस विद. आजम कुछ और कहना चाहोगे आप एसएमई के हवाले से? हाँ जी सर, जैसे मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ इसमें कि स्टेट बैंक ने बाकायदा इस सिलसिले में बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं. मैं 3 पॉइंट्स कवर करना चाहता हूँ. एक तो ये जो यहाँ पे शुरू में एक बात की गई थी कि बिलखसूस वो पर्सपेक्टिव एक्सपोर्टर का था, लेकिन मैं तमाम एसएमईज की बात कर रहा हूँ कि ये कहा गया कि भाई एसएमईज को हैंड होल्डिंग दी जाए, उनको हेल्प आउट किया जाए रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स या रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ फाइनेंसिंग फॉर्मेलिटीज. तो स्टेट बैंक ने बाकायदा इस सिलसिले में सर्कुलर किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री किया हुआ है कि अगर आपने एसएमई बैंकिंग करनी है तो आप नॉन फाइनेंशियल बैंक्स को ये कहा गया कि आप नॉन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज जो है उसका भी एहतमाम करें और एसएमई क्लाइंट्स को की हैंड होल्डिंग करें. अच्छा, अब इससे थोड़ा सा एक कदम और हम आगे बढ़ रहे हैं. इसके हमने हालांकि इसकी हम क्वार्टरली रिपोर्ट भी मंगवाते हैं नॉन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज की, लेकिन जब हमने इसमें लेकोना था तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस पर हम इंशाल्लाह ताला काफी बैंक्स ने काम कर भी लिया है कि बैंक्स अपने यहाँ एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए एसएमईज के लिए, और उनका पूरा एक का एक सेटअप हो कि वो के पर्सपेक्टिव से जब साफ ज़ाहिर वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, बस डेडिकेटेड स्ट्रक्चर है टू डील विद एसएमईज या टू डील विद एसएमई बैंकिंग. तो जब इस तरह की चीजें हो जाएंगी तो फिर उसके अंदर उनके पास स्पेशलाइज्ड लोग भी मौजूद होंगे जो नॉन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज को या हैंड होल्डिंग को देख रहे होंगे. लास्ट मेरा पॉइंट जो है वो समीडा के हवाले से. समीडा के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर है हर पर्सपेक्टिव से. कई हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं समीडा के साथ
جس پہ ان کے مختلف مینجمنٹ کے مختلف جو ٹیئرز ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. پالیسی سے لے کر ہینڈ ہولڈنگ، فیزیبلٹی، تمام اسپیکٹس کو ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. حال بتائیے جو اس وقت جو پرابلم ہے وہ سمیڈا کے اینڈ پر اتنا ضرور ہے کہ وہاں پر ریسورسز کی کچھ کمی ہے، جس کے ریوائول کے لیے یا امپاورمنٹ کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، اور اس کا جو کچھ تعلق ہے وہ ابھی اس وقت نیشنل لیول پہ ایک SME پالیسی بن رہی ہے. اور ریسنٹلی اگر آپ کے نالج میں ہو تو گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر آفس نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بھی بنائی ہے ٹو ڈیل ود SME پالیسی، کہ وہ اس کو دیکھے گی اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے گا نیشنل SME پالیسی اپروو ہو جائے. یعنی بن چکی ہے، ریویو بھی ہو رہی ہے، اور اب گورنمنٹ لیول پر اس کو دیکھا جا رہا ہے فردر ریویو کے لیے. تو ہوپ فلی جب وہ پالیسی اپروو ہو جائے گی تو سمیڈا کے بھی کئی مسائل جو اس کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ سالو ہو جائیں گے، اور سمیڈا ایک زیادہ بہتر ایفیشینٹ ادارے کے طور پر وہ یعنی فردر یعنی اس پرسپیکٹو سے بھی جو آپ کو اگر ڈیٹا یا اس طرح کی چیزیں جن کا تعلق سازگار ریسورسز کے ساتھ ہے وہ بہتر ہو جائیں گی. تو آئی ہوپ کہ آنے والے سالوں میں مزید اس میں بہتری آ جائے گی، اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اور بہتر ہو جائیں گی. تھینک یو سر. اچھا، آئی ہیو اے کپل آف سجیشنز جو میں نے پہلے کہا تھا. جیسے فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک نے یہ رسک شیئرنگ فیسلٹی ابھی انٹروڈیوس کی تھی فار سیلریز اینڈ ویجز، اور اس میں رسک شیئرنگ فیسلٹی انہوں نے 60% الاؤ کیا ٹو بینکس فار SMEs. تو آئی تھنک دس واز اے ریئلی گڈ اسکیم. Maybe the state bank can consider that rather than just confining it to salaries and wages, it could also be extended to those SMEs that have limited collateral and they can avail working capital financing also from banks. So that is just a suggestion from my end. Jahan tak role of SMEDA ka taluk hai, I think SMEDA abhi jo hai na, they're mainly looking at, they're mostly doing feasibility studies. So going forward, maybe the role of SMEDA can be strengthened and focused for export-oriented projects. उनका फोकस उसके ऊपर जरा ज्यादा होना चाहिए. और गवर्नमेंट के लेवल पे आई थिंक कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जैसे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए काफी एम्फेसिस करती है, मे बी एन इंडस्ट्रियल जोन कैन बी डेवलप्ड जस्ट फॉर SMEs, और वहां पर सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे उन SMEs के लिए. सो समथिंग जस्ट स्पेसिफिक फॉर SMEs itself. Maybe that the government should consider. And Fareed sir, میں just a supplementary. جسٹ اگر سمیڈا سے کوئی موجود ہے تو بہتر ہے کہ وہ ریسپانس کرے وقار صاحب، ادروائز پھر میں کچھ بتا دوں گا اس سلسلے میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہیں. جی سمیڈا سے ہے کوئی پارٹیسپینٹ؟ جی آئی تھنک شہریار طاہر صاحب تھوڑی دیر پہلے تھے، بٹ we let Ahmed check. Ji Ahmed, you can check this probably, and we'll just open it up for the attendees as well. But just a supplementary question for Fareed Saab. So Fareed Saab, تھوڑی دیر پہلے جب ہمیں کامران صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ڈالر فائنینسنگ کے اندر جو ایشوز آ رہے ہیں، تو بینکس کی طرف سے مین جو ایشو ہے ریلکٹنس کا، وہ کہاں پہ آ رہا ہے ڈالر فائنینسنگ میں؟ is that due to lack of insurance, lack of credit worthiness? Why is it کہ even for the smaller amounts or for smaller exporters, dollar financing for exports may not be available? I am not really aware of it, but میں اپنے colleague سے check کر کے I'll just come back to you on that, okay? وقار صاحب اگر مجھے تھوڑی اجازت دیں. جی پلیز. کہہ رہے تھے کہ جو ہے بینکس نے اپنی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی جی ان کی ڈاکومنٹیشن، ان کی ریکوائرمنٹس وہ، لیکن جو بیریئر ہے وہ بیریئر بیسکلی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، آن گراؤنڈ بیریئر ہے ان کی کمرشل جو ہے وہ انٹرسٹ، اور دوسرا بیریئر جو ہے وہ ہے ریلیشن شپ کا. SME کا ریلیشن شپ اس طرح سے کمرشل بینک کے ساتھ نہیں ہوتا جس طرح کے ایک بڑے ایکسپورٹر کا، بڑی اینٹی کا ہوتا ہے. تو یہ دو ایشوز جو ہیں یہ اس کی وجہ سے آتے ہیں. ایون بڑے ایکسپورٹرز کو بھی جو بینک بول دیتے ہیں کہ جبکہ ہم سنتے ہیں اور اس میں ہم پریس ریلیزز بھی دیکھتے ہیں، اور جو انیشیٹیوز جو ہیں وہ اس وقت SBP نے لیے، لمٹس انہانس کی، باقی کیا، تو وی اپریشیٹ دیٹ. لیکن بینکس کے پاس جب جاتے ہیں تو سرٹن بینکس جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری تو لمٹ ہی برسٹ ہو چکی ہوئی ہے،
اور اس کے لیے آپ اسٹیٹ بینک سے بات کریں. اور جب ہم اسٹیٹ بینک سے چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی لمٹ میں ابھی کافی کچھ باقی ہے, لیکن دے آر ریلیکٹنٹ کہ جناب, اور پھر ان کا ایک آگے ایک میکنزم ہے کہ انہوں نے کس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کو کتنا دیا ہوا ہے, کس ایریا کو انہوں نے کتنا جو ہے وہ وہاں پہ مارک کیا ہوا ہے. تو کائنڈلی اگر ہم یہ ان کی پریورٹیز کو بھی تھوڑا مانیٹر کر لیں کہ جو پوٹینشیل ایریاز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ فائنانسنگ انویسٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا اس کو ریوائز کر لیا جائے تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی تھینک یو. جی عزیز اللہ صاحب, اس کا صرف آپ جواب دینا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ہم نے جو ہے وہ گاہے بگاہے ایس ایم ای پہ اور کمرشل بینکوں کو جو ہے بلا کے کافی میٹنگز بھی کی جس میں یہ پوائنٹ بھی اٹھایا گیا اور بینکوں کو اس پہ کہا ہے اس پہ روٹین چیکس بھی ہم جو ہے نا وہ کرائیں گے, لیکن پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا ویلڈ ہے, اس کو ہم جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں. We are working on it and we'll be looking towards it. Thank you, Ashok bhai. Ji, thank you. So Umair, we can now open for any of the participants in case they would like to ask any questions. I know that we are entering into the last part of our discussion, but in case our participants have any questions, you may allow that, please. I do see Ahmed Qadir Saab here from Competition Commission of Pakistan in case he would like to add something. I think he is online. Thank you, Dr. Waqar. Sorry, can you hear me? For some reason, this was a very bad connection, at least on my end, so I kept dropping in and out of the conversation. But if my voice is coming through, I think for the Competition Commission, for a focus on small and medium enterprises is becoming part of our strategy for 2020 to the period 2023. And hence, this is why I've been lurking on this very informative Zoom call. We also discussed this issue with SMEDA a couple of weeks ago. I believe there's a new SME policy that's being revised. And we'd like to make sure that the Competition Commission's perspective of ensuring that markets are not closed or competition is not hampered for SMEs is included in the policy. And we would also like the opportunity to explain the role of the CCP in promoting equitable access to opportunities for small and medium enterprises, given the overwhelming focus on SMEs. But at this stage, while the policy is being revised and redrafted, I think it's a bit premature for me to make any additional comments. But I'm very pleased to see that the State Bank and maybe the Securities and Exchange Commission of Pakistan are also playing a very important role. SMEs have great potential in Pakistan in terms of employment, in terms of economic activity. I think it's imperative for all regulatory bodies, all concerned stakeholders to play whatever part they can in formulating good policy and good policy mechanisms for enforcement and sort of continuity to make sure that they can grow and thrive and reach their true potential. Thank you. Thank you, Ahmed Saab. And I think you've raised a very important point, and which actually almost forces me to request for interventions from Azam Saab and maybe Kamran Saab also on this. So Azam Saab, a question for you would be, why has there been so much delay on the SME policy? And maybe for Kamran Saab, that I do know that APTMA has been contributing quite a bit to the trade policy formulation, but is there also a role for industrial policy here, which complements the trade policy going forward? Please. Sir, I think, if I may. Ji, please. I think the trade policy probably has more to do with the government than the State Bank. The trade policy would probably be more focused on energy-related issues. I don't know if this is the right forum for that particular discussion or not. Yes, that's right. But I was just sort of pointing this out from the export finance point of view, that trade policy, in fact, brings more certainty to export financing and its structure. So, but lately we have seen evaluations which point towards the fact that yes,
while trade policies have been around, they need to be complemented by industrial policy, particularly for regions and areas where industry isn't going, for sectors where industry isn't going. And that was the only purpose of asking that, although we do understand that even the trade policy has been late in coming. We were much encouraged to see the e-commerce policy this year, though. I think, sir, commenting on the trade policy, the initiatives taken by State Bank and this particular government has helped one particular thing. In the previous regime, your exports had fallen from $24 billion down to $20 billion. Now, again, we have risen back to the $24 billion mark again, which I think is a healthy sign. But what's very unfortunate in Pakistan is that we are always playing the snake and ladder game. We keep rising up the ladder and then somebody cuts us right at the top and then we fall down. There is no consistent growth in our exports like that of India's or Bangladesh's. What's encouraging is that whatever steps State Bank has taken within the last 1.5 years, and especially during COVID-19, they have held our exports and Pakistan on the export sector. Partially because of deval, but also because of positive policies from State Bank and the government, our exports have actually risen back, bounced back way more than Bangladesh's, India's, or Vietnam's. So that's a positive step, but these are temporary initiatives which have helped us bounce back during COVID-19 times. We've been very lucky as a country, but in the absence of a trade policy, we cannot go any further. We need a long-term trade policy जिसमें energy बहुत key role play करेगी. And again, I know this is not the forum, but if the government does not fix energy prices, and it's not just for the 5 export-oriented units, इस मुल्क में हर इंसान को खुशहाली का और prosperity का हक मिलना चाहिए, चाहे वो SME है, चाहे वो small exporter, small businessman. If there is a uniform trade policy across the board for all, so I think this $24 billion export can double in the next 10 years, if not 5, in the next 10 years. But we need uniform trade policies, and I'm quite certain the State Bank will always play a positive role like they have for the past 1 year since this COVID has started. Thank you, Kamran Sahab. And one of the questions that we have received, and maybe I can request Dr. Fariha to address this. This is around women-led enterprises and the fact that there could be gender-specific barriers to business, gender-specific barriers to accessing credit, finance, and participation in trade. And I do understand that Dr. Fariha has been working with Karandas and related initiatives. And Dr. Sahab, in case you have any findings to sort of validate not just this, but also if there are any recommendations that how these gender-specific barriers to accessing finance or participation in trade could be overcome. Exactly. I mean, we did this study with Karandas, and of course that study was for BIS beneficiaries. It was targeted towards the disadvantaged segments of society. But one thing is common, whether it's you know, the poor females below the poverty line or the females who are actually, you know, starting in the market, that there's lack of information, there's lack of, you know, actually gaining access to finance, and these barriers are, you know, much more stronger in case of women. Even the literate entrepreneur with startups, I mean, they're a bit reluctant to gain access to finance in the start, and then after a certain period of time, they feel confident enough to handle all these issues. And also there's lack of certain, there's one feature that is prominent in our banking sector is that there are certain inappropriate products which are not meant for, you know, females. I mean, they're not conducive or friendly for female utilization. So again, if you see at our commercial banking portfolios, nearly majority of the loans are collateralized in nature, and these are all high-powered, you know, collaterals from precious metals to real estate and all this. So this is one aspect that we need to look at, because also in terms of female exclusion, financial exclusion in Pakistan,
there is a certain difference between the men financial inclusion and the female financial inclusion, and we are already lagging behind the region. So there is a dire need for gender responsive products from the commercial banks, because they are the mainstream facilitators in terms of access to finance and financial products. And also, targeting this audience which is actually lagging behind. Thank you, Dr. Saber. And I do see a hand going up. I think, is that Ahmed Saab? I think his hand is up. If you would like to say something. Yeah, thank you, Dr. Saab. You briefly mentioned about industrial policy. And just a few small short remarks on industrial policy. Industrial policies are usually direct, micro, and very selective. They are an attempt by government to influence the decision making of companies or to alter market signals. Therefore, I feel, and I think most competition regulators would feel, that they are discriminating. Industrial policy has sometimes been used as an excuse to support companies that are failing or should have failed and exited the market by delaying or retarding their decline. Basically, industrial policy, the fact that government is capable of picking winners or losers, I just have a little bit of caution that I would like to express here. Competition policy has a market orientation, industrial policy does not. So whether a hardcore industrial policy is what Pakistan needs, I would just like to sound a few words of caution on this at the moment. Thank you. Absolutely, Ahmed Saab. I think this is precisely what I wanted to add towards, because there have been voices post-COVID who have been suggesting that there may be sectors where you would require industrial policy-like interventions. However, we do understand that in the past, our experience with industrial policy hasn't been much encouraging. I think this also begs the clarification here that the Make in Pakistan initiative that is often talked about, there are players in the FDI space who often tell us that they really don't know what the contours of Make in Pakistan the program or Make in Pakistan approach looks like. Is this a drive towards protectionism? Is this a drive towards a hybrid of import substitution and export orientation? So I think greater clarity on this part is required. But I just want to go back to Azam Saab very quickly on one of the earlier questions which was posted in the chat box, that what are the delays in coming out with SME policy? We do understand that the custodian is Ministry of Industries and Production, but where are the delays and why is SME policy not coming out? It's been, I guess, over a decade now. Azam Saab, it's over to you. Thank you, sir. SME policy 2007 से मौजूद है पहले ऑलरेडी. तो जस्टिस गवर्नमेंट का जो एजेंडा था वो ये कि इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाए और इसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किया जाए, और जो लैंडस्केप में एसएमई लैंडस्केप में जो चेंजेस हैं, मार्केट डेवलपमेंट्स हैं, उसको कैटर किया जाए. तो इस पर्सपेक्टिव में समिटा इसको स्टीयर कर रहा था, इस पॉलिसी को 2016 से लेकर और 2019 तक, यानी रिसेंटली बल्कि. तो अब जबकि वो एक फाइनल स्टेज में था और उसकी कई ड्राफ्ट्स उसके रिव्यू भी हो चुके थे, तो इस स्टेज पे आके गवर्नमेंट ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनाई है, तो जिससे साझा इसका बेटर जवाब जो है वो स्मिटा दे सकता है कि इसमें डिलेज की क्या रीजंस हैं. लेकिन इसमें वन ऑफ द रीजंस व्हिच आई नो वो ये है कि कंसेंसस अमंग स्टेक होल्डर्स, वो एक रीजन हो सकता है. यही वजह है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और तमाम स्टेक होल्डर्स को दोबारा इसमें इकट्ठा किया है. तो वंस कंसेंसस इज डेवलप्ड तो आई होप कि पॉलिसी जो है वो अप्रूव हो जाएगी. अदरवाइज यानी जो मार्केट साइड से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको काफ़ी हद तक जो है समिटा ने देख लिया है और उनको टच कर लिया है और उनके कमेंट्स और फीडबैक उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया है. एक इसमें एक और रीज़न जो है वो एसएमई डेफिनेशन है. यूनिफॉर्म एसएमई डेफिनेशन साफ ज़ाहिर है वो कंसल्टेड एफर्ट्स को प्रमोट करेगा. ये एक
ऑब्जर्वेशन है कि अगर कंट्री में एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन अवेलेबल हो तो तमाम स्टेक होल्डर्स एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए साफ ज़ाहिर है स्टेट बैंक इस वक्त जो प्रिवेलिंग डेफिनेशन कंट्री के अंदर है वो स्टेट बैंक की है। तो स्मिडा इस पॉलिसी के तहत जो डेफिनेशन लेकर आया है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो लिहाजा उस पर्सपेक्टिव से भी इसको देखा जा रहा है। तो आई होप के ये रीजंस हो सकते हैं इसके डिले के, और होपफुली अभी जो ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसको मतलब मिनिमम टाइम दिया गया है कि 2 वीक्स के अंदर अंदर आप कंसेंसस बिल्ड करें और ताकि इस पॉलिसी को अप्रूव किया जाए। आई होप के इन कमिंग 1 to 2 months पॉलिसी जो है वो अप्रूव हो जाए। Dr. Saab, if you allow, I would like to highlight a point over here. जी please, Dr. Saab. I just like to make use of this opportunity that I would like to highlight the data gap that exists, since we are talking about this access to finance and credit issues faced by SMEs. So we have really awesome Global Findex data on access to finance for individuals. We have really awesome access to finance survey by State Bank of Pakistan. 2 rounds are already run. So these are, but the gap is that for individuals in Global Findex, these are only demand side aggregates and supply side aggregates are totally missing. Coming to SMEs, the enterprise, very comprehensive enterprise survey concerning access to finance is still not there, and it's the need of the hour to map SMEs all over Pakistan and map them according to access to finance, their needs, what level of working capitals are needed, what are the barriers they face. So this is directly required because data is at the base of any policy making. It's the foundation. This is exactly the problem that Pakistan is facing in terms of SDGs. So in my personal research also, I came across this barrier that it is State Bank has awesome data sets, but these are actually for dealing with credit and access to finance issues, this kind of data is needed rather than balance sheets data set. So I would just like to highlight this point. Thank you. I think this point is well taken, and in my discussions with the central bank previously as well, particularly with colleagues at the data warehouse, I think they would really like to receive such proposals. And I think coming from your side, this is one of those interventions which we should send in our report to Arshad Saab and his colleagues at the central bank. So I think we move to the last part of our meeting today. I would go back to my panelists for their final inputs, and we could start in the same order perhaps. So Arshad Saab, it's back to you for any of your final inputs. The only supplementary question that we received for you was that which new sectors have been opened up for LTFF, which you had mentioned. So if you can identify those sectors, and of course, any last points from your side. Thank you very much. Good that we have all joined for this auspicious meeting, और बड़ा fruitful एक जो है वो discussion रहा. Yes, there are issues, there are points, but please मैं यही request करूँगा सबसे, और आप जैसा पता है कि स्टेट बैंक आप देखें अगर अपने regional central banks देखेंगे तो state bank has done phenomenal changes and improvement, not only just regulatory but pushed commercial banks as well for operational side as well. So LTFF की जो अभी आपने बात की तो वो ये all sectors जो है ना वो open है इसके अंदर, और इसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक्सपोर्ट ऑर्डर निकलता है जिसके अंदर ये सारे सेक्टर हैं. तो इस वक्त जो है वो all sectors are open to apply for financing. और इश्यूज हैं, इश्यूज को जो है वो हम बड़ी प्रोग्रेसिवली जो है वो डील कर रहे हैं, स्पेशली विद स्पेशल फोकस ऑन SMEs. और कुछ ऐसे सेक्टर्स को पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली काम हो रहा है, जैसे IT. नो डाउट IT सेक्टर जो है ना इसमें बहुत पीछे रह गया फाइनेंसिंग और जो डेवलपमेंट में, जो जहाँ इसको होना चाहिए था पिछले 8-10 साल में. डेवलपमेंट इंडिया में हुई है और श्रीलंका में हुई है, वो वैसे यहाँ पे नहीं हो सकी, लेकिन यह है कि उसके लिए आविष्य जो हैं वो जारी हैं. There are so many steps that the State Bank has taken with the help of World Bank and SECP के साथ.
تو ایسا نہیں ہے کہ فائنینسنگ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، فائنینسنگ اویلیبل ہے اور نئی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ نئے پروجیکٹس اوپن ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کانسیپٹ پیپرز آ رہے ہیں جس پہ ہم جو ہے وہ بینکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کچھ آرڈرلی چیزیں ہیں جو کہ اوبویسلی کرنے والی ہیں، جس میں کمرشل بینک کو پش بھی کیا جا رہا ہے اور خود ان سے بیسکلی ہم نے کہا جیسے اسمال ایس ایم ایز ہیں، کچھ چیزیں تو اویلیبل ہے. اگر آپ ایس ایم ای کی پی آرز دیکھیں تو اس میں 5 ملین تک جو ہے وہ لون اویلیبل ہے، نان کولیکٹرلائزڈ ہے، جس پہ جو ہے وہ بٹ پرابلم یہ ہے کہ دیز آر آل ڈیمانڈ ڈریون ہے. اگر ڈیمانڈ ہوگی تو ایک چیز وہ ہوگی نا. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ چیز تو سپلائی کر رہا ہے، آپ کو فیسلٹی دے رہا ہے، لیکن آبویسلی اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کیا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. جہاں وقار صاحب نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے جو اس کی جو ہے وہ ایکسپینشن ہوگی. تو سیکٹرز ہم نے کافی جو ہے وہ بلکہ ایل ٹی اے لانگ ٹرم میں تو ہم نے سارے سیکٹرز ہی آلموسٹ کھول دیے ہیں. ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس طریقے سے جو ہے وہ لیتا ہے اور کس طریقے سے ایکسپورٹ ایکسپینشن ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ پچھلے 1.5 سال کے اندر جس طرح ہم نے پرویکٹیولی جو ہے وہ اسکیمس کو کیا ہے ایکسپورٹس پہ نیکسٹ تو آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہوپ فلی انشاءاللہ جب یہ سب سلسلہ ختم ہوتا ہے کووڈ کے بعد تو ہوپ فلی پازیٹیوٹی تو آئے گی، کیونکہ جتنا جو ہے وہ ایکسپورٹرس کو اگر آؤٹ فال ہوا ہے ان کا تو وہ ان کو ریلیف ڈیفینیٹلی یہ بھی ملے گی. اور وہ دیکھیں کہاں تک یہ ریلیکسیشنز جو ہے نا وہ چلتی. آئی تھنک کہ جو بھی میجرز ہم نے لیے ہیں بڑے پازیٹیو میجر ہیں، بڑا دیکھ کے لیے ہیں اور ہم اور بھی پش کر رہے ہیں ایکسپورٹرس کی ریکویسٹ وغیرہ. تو آئی تھنک کہ وی آل ہوپ فار دی بیسٹ. اینڈ میری اور ریکویسٹ ہوگی ایکسپورٹرس انڈسٹریز کے، صرف یہ بیسکلی ریگولیٹر ہی جو ہے وہ اس کا کام نہیں ہے، منسٹری کا بھی کام ہے، ایکسپورٹرس کا بھی کام ہے کہ اویئرنیس بڑھائیں اور چھوٹے ایس ایم ایز کو نہ صرف یہ کہ ریگولیٹر سپورٹ کرے بلکہ گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے اور ایکسپورٹرز بھی جو ہے بگ ایکسپورٹر وہ بھی سپورٹ کرے. اسی طریقے سے ایک میوچل جو اسٹانس رہے گا اور سب ایک ساتھ جو ہے نا وہ پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو ریگولیٹر تو اپنا کام کر رہے ہیں. وی آلویز انوائٹیڈ پیپرز آن اٹ. میں بھی ریکویسٹ کروں گا اس میٹنگ کے حوالے سے کہ جو بھی آپ کی کنسرنس ہیں آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں. بھی آپ کو پتہ ہے ہمارا ریکارڈ بیسکلی ہم 100% ایڈریس کرتے ہیں ایشوز کو، جینوئن ایشوز کو ہم جو ہے وہ اس پہ میٹ اپ کرتے ہیں اور گروپس بناتے ہیں اور اس پہ جو ہے نا وہ آگے چلتے ہیں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ پاکستان کے ایکسپورٹس بھی جو ہے وہ اس میں خاطر خواہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اضافہ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ ایک پازیٹیو نوشن جو ہے نا وہ اس طرح کی میٹنگز اور گروپس ڈسکشن سے جاتا ہے. وہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ کم سے کم کچھ لوگ جو میٹنگ کے اندر ہوتے ہیں وہ تو آگے جو ہے نا ہماری کاوشیں جاری ہیں اور ہم آج بھی جو ہے وہ آج کی اس میں بھی اسکیمز پہ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو فردر اور اس طریقے سے ریلیکس کیا جائے. تو یہ ایک اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہے. ایس ایم ای بھی بڑا انٹینسولی کام ہو رہا ہے، جیسے اعظم نے بتایا بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری پراپرٹیز جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں. انشاءاللہ جب ایک ساتھ یہ سال 6 مہینے میں کام شروع کریں گی تو اور اس میں جو ہے نا امپروومنٹ آئی. 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے وہ ایکسپورٹرز کی 100% کوئریز کو ریزالو کریں، کیونکہ ہر ایکسپورٹر کے اپنے الگ الگ ایشوز ہیں بٹ یہ ہے کہ میکسیمم ہماری یہی ہے کہ اسٹینڈرڈائز ویو میں میکسیمم جہاں تک ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں کنٹری کو. سو آن دس نوٹ تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو اینڈ تھینکس فار مائی سائڈ. عزیز صاحب پلیز. جی بہت شکریہ جی. ارشد صاحب نے بڑا جو ہے وہ خوب بھی دلائی اور ارشد صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ رہتا بھی ہے اور یہ بڑا اس کو پریورٹی کے اوپر جو ہے وہ ایکسپورٹرز کے مسائل کو وہ دیکھتے بھی ہیں، بینک سے بات بھی کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے ہمارے حل بھی ہو جاتے ہیں. تھینکس ٹو ارشد صاحب اینڈ ایس پی پی نے جو کووڈ کے اندر کیا، اس کا میں نے اسٹارٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے سیلریز کی مد میں اور اس کے بعد جو فائنانسنگ کی دوسری اسکیمز لے کے آئے ایس ایم ایز کے لیے اور باقی وہ اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے. اور جو لے آف ریشو تھی وہ بہت زیادہ کم رہی اس دفعہ الحمدللہ. اور جہاں تک رہی ایکسپورٹ کی بات تو آپ نے اگر جولائی کے فگرز دیکھے ہوں تو الحمدللہ پاکستان نے جو ہے وہ دوبارہ سے گرو کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور ایکسپورٹس ہماری جو ہے ویلیو ایڈڈ کی بہت اچھی رہی ہیں اس جولائی کے اندر. تو انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ جی. اور ان سے اس طرح کی میٹنگز جو ہیں وہ وقار صاحب ضرور کرتے رہا کریے تاکہ جو ہے وہ انٹریکشن بھی ہوتا ہے اور مسائل بھی ہائی لائٹ ہوتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں
जो जैसे समीडा के बारे में या टीडैप के बारे में हमें पता ही नहीं होता बहुत सारी चीज़ों का कि वो उनका रोल क्या है इसमें और वो क्या कर रहे हैं। अभी तक वैसे उनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा वाजिया हो नहीं सका एक्सपोर्ट्स की मद में, पॉलिसी मेकिंग में डेफिनेटली होएगा, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना रोल पूरे तरीके से अदा करेंगे और एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। Thank you, Aziz sir. Really appreciate your time, Ji. Kamran sir. Ji Waqar Saab, I think this was a very good discussion, or it was very productive to have gentlemen from State Bank, private sector, other institutions. I think going forward, अगर हमारे इस तरह के interactions होते रहेंगे, तो we will keep providing State Bank with feedback. Again, State Bank has played a very positive role and a very proactive role. And जैसे Arshad Khan साहब ने कहा कि compared to regional central banks, probably State Bank of Pakistan has played a very conducive and encouraging role. Going forward, the momentum needs to be kept, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की prosperity depends upon increasing foreign remittances and export proceeds, dollar proceeds. So whatever State Bank can continue doing on that regard would be very good. Import compression भी हुई है, import compression को मजीद encourage किया जा सकता है through the Made in Pakistan brand, which means encouragement of local industry. So I think अगर आप export को boost up करेंगे by proactive policies, आपकी dollar remittances बढ़ेंगी. अगर आप local industry को boost करेंगे, तो आपकी मजीद import compression and import substitution होगी with local production. Again, I think I would like to close from my side कि अगर State Bank review कर सके जो इन्होंने turf की scheme दी है, which is very encouraging. However, बहुत सारी industry इस वक्त trade रुकी हुई है. Mostly लोगों ने moratorium ले लिया है 1 year के, although मैंने 1 year का moratorium नहीं लिया, but mostly industry ने 1 year moratorium ले लिया है. तो उसमें banks will be reluctant and will be hesitant in marking allocations under turf, because banks ने, commercial banks ने, State Bank एक अच्छी चीज देखता है, commercial bank अपना risk देखता है, बल्कि बहुत सारे commercial banks ने even moratoriums देने में या उनको process करने में unnecessary delays की हैं. मैं इधर किसी बैंक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन I think State Bank probably should conduct a study of all the commercial banks, which banks gave those moratoriums the quickest and which deferred. I'm sure State Bank के पास complaints भी काफी high होंगी इस regard में pertaining to commercial banks. So I think State Bank probably needs to regulate all the commercial banks a bit more as far as State Bank's own instructions are concerned. अगर moratorium दिया तो बहुत सारे banks ने वो आगे companies को नहीं pass on किया based on their own internal balance sheets, कि जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है उसको कमर्शियल बैंक्स ने पहली प्रेफरेंस दी, जिसकी नहीं अच्छी obviously onus of responsibility तो कमर्शियल बैंक है, but if something is backed by the State Bank and given by the State Bank, so लाजिम और मलजूम है सारे कमर्शियल बैंक्स पे उसकी implementation. But again, State Bank played a very positive role. Keep up the good work. हमारे साथ इंडस्ट्री के साथ, एसोसिएशंस के साथ जितना स्टेट बैंक का इंटरेक्शन बढ़ेगा उतना आई थिंक पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा. अजीजुल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें शायद TDAP या एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का इतना नहीं पता या उनकी पॉलिसीज का जितना हमें स्टेट बैंक ने बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया. सो कीप अप द गुड वर्क. थैंक यू. Ji, thank you very much, Kamran sir, for your participation. And lastly, maybe if I can request Fareed sir. It was a pleasure to be here. Thank you for inviting me. Although this is the first time I've come on this platform. I think all commercial banks, we play a very maintain a close liaison with State Bank, and whatever they say that we are governed by them, and we will continue to play a positive role in the future also to support the industry. Thank you indeed, Fareed sir. And I think with this we can formally move towards the closure. There is a page, a SEDI web page at our STPI's website where we keep on posting the proceedings from the SEDI meetings. There is a feedback form over there as well. Please help us
improve this public-private dialogue process. There will be a report which will be shared with all of you, and also will be sent to the central bank. And of course, please feel free to add on any other written inputs which you'd like us to send to the central bank. I do understand we had non-native participants as well who wanted us to move the format into English, and my apologies if we couldn't do it throughout in our format, but we will provide you with an English, with a summary of proceedings in English language as well. So let me formally thank everyone and close this meeting. The video recording would be available with us in case you'd like to share in your circles. Thank you indeed for your time. Really appreciate it. Thank you.